channel of Gyan Manji Morning School. Today we are going to start chapter number 3 of Maths, Metric Measures Length. Okay, in previous lecture you have done exercise 3.2 question number 1 to 4 question. Subtraction and addition and convert centimeter to meter and centimeter. Today we are going to start measuring longer lengths. Okay student, 3.3 exercise 3.3 longer measuring length. Exercise 3.3 page 102. Measuring longer length. Measuring longer lengths. लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर. लॉन्ग डिस्टेंस का मेजर हम किस में करते हैं? किलोमीटर में करते हैं. यस, लॉन्ग डिस्टेंसेस आर measured in kilometer. Okay, first convert from convert from higher unit to lower unit. Higher unit to lower unit. B multiply. क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. To convert from higher unit to lower unit, we multiply. For example, convert kilometer to meters. Okay. Now convert ऐसे kilometer to convert. So we will multiply. Yes, student. So one kilometer is equal to 1000 meter. यस, 1 किलोमीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर. ओके, सो हियर 4 किलोमीटर कितना दिया है? 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर. टेक एग्जाम्पल्स. यस स्टूडेंट, यहाँ हम एक एग्जाम्पल में समझ रहे हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो 4 किलोमीटर is equal to, we will multiply by 1000. Yes, हम किसके साथ करेंगे? 1000 के साथ में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे. So 4 multiply by 1000, so it become 4000 meter. Yes, then 7 multiply by 1000. So it will become 7,000. Okay,
7000 meter. Okay. Next 9 kilometer convert to meter. Yes, 9 kilometer convert to meter by multiply 1000. ओके, 1000 के मल्टीप्लाई के द्वारा कन्वर्ट करेंगे तो 9000 मीटर. यस, क्या हो गया? ये क्या है? कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर. कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर. ओके, kilometer is higher unit and meter is lower unit. Yes, so we multiply by 1000. Okay, we multiply by 1000. हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ. ओके, सो 4 किलोमीटर, 4 into 1000 is 4000 meter. 7 kilometer convert into meter. So 7 kilometer convert to meter. 7 into 1000 is 7000 meter. Next 9 kilometer. 9 kilometer convert to meter. So 9 into 1000 is equal to 9000 meter. Okay, not down. Have you written it, student? Now let us say, take example from, let us see example from textbook. First, second example. Okay, 2 kilometer and 3 kilometer, student. 3 kilometer 200 meter. Yes. So first of all, we will write formula here. So for 1 kilometer is equal to 1000 meter. Yes. Next, so 3 kilometer 200 meter को कन्वर्ट करना है हमको. 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर प्लस ये जो 200 मीटर हमारा है वो किस में रखेंगे? शिफ्ट करेंगे 200 मीटर प्लस के साथ में शिफ्ट कर देंगे. ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1000. सो 3000 मीटर प्लस 200 मीटर. ओके, नेक्स्ट 3000 मीटर. नेक्स्ट प्लस 3000 मीटर प्लस 200 मीटर. ये 200 जो है वो तीनों जीरो के नीचे बीच में शिफ्ट कर देंगे तो वी गेट 3200 मीटर आंसर. ओके स्टूडेंट, किलोमीटर एंड मीटर टू कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर. ओके, नॉट डन. Now we will do text exercise.
convert to meter. Okay, so 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, so 6 multiply by 1000 meter, so we get answer 6000 meter. Okay, next B 4 किलोमीटर, यस 4 मीटर कन्वर्ट टू मीटर्स, किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर्स में. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 meter, we get answer 4000 meters. Okay, next C 9 kilometer. Yes, so 1 kilometer is equal to 1000 meter. First of all we will write formula 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 9 multiplied by 1000 meter. So we get answer 9000 meter. Okay. Next D 13 kilometer. Yes. First 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 13 multiplied by 1000. Yes, meter. Next 13,000 meter. Okay, student. Please, student, note down. Have you written, student? Now we will do next sum. E 4 kilometer 100 meter. Yes, 4 kilometer 100 meter. First of all, we will write formula 1 kilometer is equal to 1000 meter. Yes, next 4 kilometer converted to 1000. So 4 multiplied by 1000 meter plus 100. कितने करना है अपने को? 100 मीटर. Yes, friend. Then 4 multiplied by 1000, 4000 meter. 4000 meter. Okay, plus 100 meter. So it become 4100. Okay, 4100 meter. Okay, next F 7 kilometer 350 meter. तो 1 क्या होगा? पहले फॉर्मूला लिखेंगे. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. यस, देन 7 किलोमीटर convert of 7 kilometer to meter, then plus 350 meter. ओके, उसके अंदर 350 मीटर को ऐड कर देंगे. ओके, तो फर्स्ट 7 multiplied by 1000. नेक्स्ट मीटर प्लस 350
प्लस 350 मीटर. ओके, सो इट बिकम क्या बन जाएगा? वी विल गेट आंसर 7350 मीटर. ओके, नेक्स्ट जी 9 किलोमीटर and 125 meter. Yes, 1 kilometer is equal to 1000 meter. Yes. Now convert of 9 kilometer multiply by 1000. Yes. Then we will add 125 meter. Okay. क्या करना है? पहले हम 9 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, देन मीटर के साथ में हम 125 मीटर को ऐड कर देंगे. ओके, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 125 मीटर. यस, ओके. देन 1000 मल्टीप्लाई बाय 9, 9000 मीटर, 9000 मीटर प्लस 125 मीटर. यस, ये तीनों डिजिट को हमें कहां शिफ्ट करना है? जीरो के बीच में. ओके, सो हियर 9, देन 0 को रिमूव करके क्या शिफ्ट कर देंगे? 125 मीटर. वेरी इजीली, simple. Yes, so we get answer 9125 meter. Okay, note down. Have you written, student? Now we will do next question. Question number 2, exercise 3.3. Addition and subtraction of length. Addition subtractions of length Okay, first student, question number 2a already solved in your textbook. So we will start from question number 2b. First we will place kilometer, meter. Next 2 kilometer 345 meter. Next 3 kilometer
9 plus 1 10 10 0 carry or 1 to the next column. 3 plus 4 7 7 plus 1 8. So we will write here 8. Next 2 plus 3 5. So we will write here 5. So we get answer 5 kilometer 801 meter. Okay. Next let us see next sums. C kilometer 10 meter. 4 kilometer 467 meter. Then 3 kilometer 456 meter. Now we will put symbol subtraction. Student, here addition and subtraction of lengths are mixed. So student, please solve it carefully. Okay. 7 minus 6 1. So we will write here 1. 6 minus 5 1. So we will write here 1. 4 minus 4 0. So we will write 0. Then 4 minus 3 is 1. So we get answer 1 kilometer 11 meter. Okay. Next D kilometer and meter. 4 kilometer 567 meter. 3 kilometer 210 meter. Now we'll do symbol for subtraction. Okay. 7 minus 0 here is 7. And it is right. 7 minus 1. So we will write here 5. 5 minus 2. So we will write here 3. Then 4 minus 3. So we will write here 1. So we get answer 1 kilometer 357 meter. Next. E F. ओके, ये आपको होमवर्क में है. E F and E F G H I. E F and G is homework. ओके, ये तीनों सम्स आपको किसमें है? होमवर्क. E F and G in homework. नेक्स्ट E. D के बाद हम क्या आंसर लेंगे? H. E F G आपको होमवर्क में अपने आप से करना है. H का सम्स मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ. किलोमीटर एंड मीटर. ओके. 3023 meter. Next 456 meter. Now we'll to solve sums. 3 here is 3, here is 6. Yes. So 3 is less than from 6. So we will borrow from next digit. Okay. So 2 will become 1 and 3 will become 13. Yes. 13 minus 6 student. 13 minus 6 7. So we will write here 7. Next same again situation. Here is 1. Here is 5. 1 is less than from 5. So we cannot subtraction from 5 from 1. So we will borrow 0. 0 के पास भी नंबर नहीं है. ओके. सो 0 से हम borrow किससे करेंगे? 3. Okay, so 3 will become 2 and 0 will become 10. Then 10 will become 9. Yes, and 9 क्योंकि हमने 10 से 1 को यहाँ पर नंबर लिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9. Okay, so 11 minus 5 student. 11 minus
साइड क्या होगा आपका 11 minus 5 6. Yes, so we will write here 6. Next 9 minus 4, so we will write here 5, and 2 minus 1 we will write here 1. Okay, so we get answer 1 kilometer 567 meter. Okay student, note down student. Have you written student? Then I. Kilometer, meter. 6 kilometer 543 meter. 2 kilometer 109 meter. Now we will do addition. We will put plus. 9 plus 3 student 12. So we will write here 2. Carry over 1 to the next column. 4 plus 1 5. 5 plus 1 6. And 6 plus 2 8. Okay. Next J. J. Kilometer, meter. 6 kilometer 789 meter. Next 1 kilometer 345 meter. Next plus 9 plus 5 14. 4 here 1 carry. 4 plus 8 plus 4 12. 12 plus 1 13. So we will write here 3 and carry over 1 to the next column. 7 plus 3 student 10. 10 plus 1 11. So here is 1. Here carry over 1. 6 plus 1 7 plus 1 8. Okay, so 8 kilometer and 134 meter. Okay, next K. Kilometer, meter. Okay, 7 kilometer 980 meter. 4 kilometer 568 meter. Now we will do subtraction. Here is 0, here is 8. So 0 is less than from 8. So we will borrow from next digit 8. Okay, 8 will become 7 and 0 will become 10. 10 minus 8 2 and 7 minus 6 1. 9 minus 5 student 4. So we will write here 4. And 7 minus 4 student 3. So we will write here 3. So we get answer 3 kilometer 412 meter. Okay student, please student note down. Okay student, remaining sums is in your homework. L, M, N, O. Okay, E, F. फिर से देखती हूँ. Homework, exercise 3.3. Exercise
राइट 3.3. Question number 2. F, E, F. Number 2. E, F, G, L, M, L, M, N, N and O. Solve sums. Solve sums in textbook. Okay. Question number 2. E, F, G, L, M, N and O. Solve sums in textbook. टेक्स्ट बुक में ही आपको करना है, नोटबुक में नहीं करना. ओके. बाकी के सम्स मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.